Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and fellow listeners, today we will disseminate the knowledge about the entitled theme, Limitations of Operant Conditioning Theory. As we have already discussed, implications of operant conditioning theory. Operant conditioning theory is that theory which is based on environmentalistic approach. किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है by providing environment. It means with the help of training, the modification of the behavior takes place. Dear students, today we will focus on various limitations of operant conditioning theory. जैसे कि हम सब जानते हैं, operant conditioning theory is one of the behavioral theory. The theory is propounded by one of the eminent behavioral psychologists, namely B.F. Skinner. Now, so far as major limitations or drawbacks of theory are concerned, these are mentioned as under. Number 1, ignores covert behavior. As we know that there are two types of behaviors. One behavior is known as overt behavior, and second behavior is called covert behavior. Overt behavior is basically external behavior, which is observable, or we can also say that which is measurable. जो भी behavior measurable होगा या observable होगा, जिसको हम observe कर सकते हैं, उस behavior को हम overt behavior कहते हैं. Keeping in view the operant conditioning theory, it believes on overt behavior. It means that behavior which is observable, that behavior which is measurable, जिसे हम measure भी कर सकते हैं और observe भी कर सकते हैं. But the theory neglects the another important behavior, which is known as covert type of behavior. Dear students, covert behavior is basically internal behavior of an organism, which is non-observable, जिसको ना हम मेजर कर सकते हैं ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. मगर covert behavior is equally important as the overt behavior is. हम covert behavior को neglect नहीं कर सकते हैं for the cost of overt behavior. As per the various psychologists, especially the cognitive psychologists are concerned, they highly criticized operant conditioning theory because operant conditioning theory only focuses on overt behavior and by and large neglects the covert behavior of an organism. कुछ cognitive psychologists का मानना है overt behavior जो organism का है, that is influenced or affected by the covert behavior. तो कैसे हम covert behavior को neglect कर सकते हैं? Overt behavior in sense, when somebody walks, when somebody dances, when any person talks, these are all overt behaviors. किस तरीके से एक पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, चाहे वो रन करता है, चाहे वो डांस करता है, चाहे वो किसी के साथ बात करता है या कोई काम अंजाम देता है जहां पर वो अधिकतर मोटर ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है. सो दैट बिहेवियर इज overt behavior. But apart from overt behavior, there is also another important behavior which is known as covert behavior. Covert means internal behavior which is non-observable,
विच इज नॉन मेजरेबल, जिसे हम मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, मोटिव्स, these are all covert behaviors। और BF सिकनर की operant conditioning theory ने, I mean to say you by and large all behavioral theories, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है या थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, these all behavioral theories by and large neglects the covert behavior and focuses on overt behavior. That is why the theory or these theories has been highly condemned and challenged by various cognitive psychologists. Dear students, when some organism expresses the overt behavior, like that कोई इंडिविजुअल दौड़ रहा है, वो एक्सप्रेस उसके overt behavior को करता है क्योंकि पर्सन दौड़ता है, लेकिन वी डू नॉट नो द कॉज ऑफ overt behavior। overt behavior का जो कॉज है, दैट इज एक्चुअली द covert behavior, बट वी डू नॉट नो दैट कॉज। ये पर्सन क्यों दौड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, कॉज में भी कोई पर्सन दौड़ता है, इसका कॉज ये हो सकता है क्योंकि इसे पीछे से कोई चेज कर रहा है, इसीलिए ये फास्ट दौड़ रहा है। या कॉज में भी कोई पर्सन रन कर रहा है फास्ट, इसका कॉज ये भी हो सकता है वो अपनी फैट लेवल को रिड्यूस कर रहा है, फिटनेस के लिए वो दौड़ता है। या इसका कॉज कोई और भी हो सकता है, जो ये फास्ट दौड़ रहा है अपने ओवर्ट बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, उसे बस छूट चुकी है ताकि वो ऑफिस वक्त पे पहुंच जाए। तो दीज ऑल आर बेसिकली द कवर्ट बिहेवियर्स, बट दीज कवर्ट बिहेवियर्स आर नॉट नोन। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दीज कवर्ट बिहेवियर्स। नटशेल में हम कह सकते हैं, थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड or challenged because it only lays emphasis on overt behavior, external behavior which is observable, and by and large it neglected the covert behavior। लेकिन covert behavior जैसे कि हमने already डिस्कस किया है, ये equally important है as overt behavior is। जब तक कि हम covert behavior को स्कोप नहीं देंगे, तब तक जो overt behavior है वो incomplete है। And it was the first criticism which was done against the operant conditioning theory। Number second, focuses on punishers and negative reinforcement। Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, reinforcers are basically known as heart of operant conditioning theory। As per the various operations are concerned, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ शेपिंग है, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ एक्सटिंक्शन है, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट इटसेल्फ है, all the operations are based upon reinforcers। That is why reinforcers are called the heart of operant conditioning theory। Keeping in view the operant conditioning theory, with the help of various reinforcers, we can modify, we can change the behavior of any organism। जितना कि हम reinforcers का यूज करेंगे, चाहे नेगेटिव reinforcement, पॉजिटिव reinforcement या शेड्यूल्स ऑफ reinforcers, हम इन reinforcers से एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। एक अनट्रेनड ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर ट्रेनड बना सकते हैं व्हेन वी विल यूज द जुडिशियस reinforcers। जब हम reinforcers यूज करेंगे, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को reinforcement देंगे, हम आराम के साथ, आसानी के साथ एक अनट्रेनड ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। नाउ कीपिंग इन व्यू द यूज ऑफ नेगेटिव reinforcement and punishers,
No doubt it helps to modify and change the behavior of organism. No doubt use of punishers and negative reinforcement strengthens the behavior of any organism. Keeping in view operant conditioning theory. The operant conditioning theory believes the negative reinforcement punisher also helps to modify the behavior of organism. लेकिन इसका बड़ा एक लेक्यूना यह है, आई मीन टू से यू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का बड़ा फ्लॉ यह है, जब हम पुनिशर इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीटिंग द लर्नर और एनी इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ whip और मेटेलिक रॉड, या हम किसी एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुलस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू मॉडिफाई और अल्टर डाउन द बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव है, वो एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है। चाहे हम पुनिशर का इस्तेमाल करेंगे टू बीट समवन विद द हेल्प ऑफ whip और मेटेलिक रॉड, या हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करेंगे, सोशल कंडमनेशन, इंसल्टिंग द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, कोई नेगेटिव बिहेवियर एक्सप्रेस करने के लिए हम एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुलस यूज नहीं कर सकते हैं, हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज नहीं कर सकते हैं। वी विल यूज एब्यूजिव एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज अगेंस्ट द पर्सन, हम उसे डिसरेस्पेक्ट करेंगे, डिफेम करेंगे। इट हैज हैविंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेजर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आर it leads the individual in the psychological state where the individual becomes victim of depression, stress, phobias, anxiety, distress and other mental health related issues, जिससे कि सिर्फ उसकी लर्निंग ही पे असर नहीं पड़ता है बल्कि उसके होल पर्सोना पे असर पड़ता है। There is probability the individual will become the victim of personality disorder. तो छोटी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज वाई वी हैव टू रिफ्यूज द पुनिशर्स एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जहां पर हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से एक फायदा पहुंचता है, लेकिन वहीं पर इसके 10 नुकसानात है। अगर किसी में ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम है, आई मीन टू से यू ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो ड्रग एडिक्शन का हैबिट छूटने के लिए हम एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुले का यूज नहीं कर सकते हैं, पुनिशर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने पुनिशर्स का इस्तेमाल किया, एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुलस का इस्तेमाल किया है, तो उससे ज्यादा चांसेस है इंडिविजुअल को बिगड़ने की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। That is why operant conditioning theory has been highly criticized because it lays emphasis on use of punishers and negative reinforcement. Number 3, violation of ethics. Dear students, operant conditioning theory has also criticized and challenged because it violates the norms, rules and regulations. How operant conditioning theory violates the norms, rules and regulations. Keeping in view the use of negative reinforcement, especially the punisher. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सेकंड पॉइंट में कि जब हम पुनिशर इस्तेमाल करते हैं, as the theory has been propounded by conducting the experiments on various animals, और किस तरीके से बीएफ सिकनर ने इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ रेट। रेट को कभी कभार इलेक्ट्रिक करंट दी जाती थी सो दैट द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन विल टेक प्लेस इन द रेट। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर अदर बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स, जिस तरीके से जेबी वाटसन ने शीप को इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रिक करंट दी थी।
That electric shock was punisher. Electric current given to the rat was punisher. Because punisher is that where there is experimental arrangement. और यही पुनिशर हम इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में, इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में, या एनी अदर एवर्सिव टाइप ऑफ स्टिमुलस हम एक ह्यूमन नेचर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली द वायलेशन ऑफ लॉस. एक ह्यूमन बीइंग को हम इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे सकते हैं. अगर किसी ने कोई रॉन्ग बिहेवियर एक्सप्रेस किया है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ थेफ्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ लूटिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्टीलिंग, तो स्टीलिंग पे हम किसी को इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे सकते हैं, किसी को हम इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. डियर स्टूडेंट्स, हम क्राइम रेट रिड्यूस करने के लिए एवर्सिव स्टिमुलस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक देना या कोई स्टर्न पनिशमेंट एक ऑर्गेनिज्म को देना. इट इज डायरेक्टली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. कीपिंग इन व्यू द operant conditioning theory, we cannot give the stern punishment to the individual. जहां तक कि एक लर्नर की बात है, अगर कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर लर्नर में है तो पुनिशर के जरिए हम अनडिजायरेबल बिहेवियर रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुनिशर यूज करने से न कि वायलेशन ऑफ लॉज, नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, बल्कि जो इंडिविजुअल है उसकी इंडिविजुअलिटी पे असर पड़ता है. इट विल गिव बर्थ टू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू द इंडिविजुअल. दैट इज व्हाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी has highly criticized and challenged, because there is the direct violation of ethics. Ethics in sense when we use various punishers and with the help of that punishment we try to modify or mold the behavior of the organism. So it is not the appropriate way by which we can change or modify the behavior of an organism. I mean to say you, ये एक सही वे नहीं है to smash and shatter the problem. Number 4, all behaviors cannot be conditioned. Dear students, as we know that conditioning simply means habit formation develops in an organism. जब एक organism में habit formation develop हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम कंडीशनिंग कहते हैं. बट हियर दैट बिग फ्लॉ फाउंड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, हर कोई हैबिट हम एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं कर सकते हैं. आई मीन टू से यू, हर कोई बिहेवियर हम एक ऑर्गेनिज्म में कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम डॉग को फ्लाई करना नहीं सिखा सकते हैं. Dog cannot fly in the air. The dog can learn the basic skills. कुछ behaviors हम dog में ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन हर एक behavior जो है एक एनिमल में नहीं डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक डॉग जो है वो डोमेस्टिक काम कर सकता है, या हम देखते हैं कि डिफेंस में डॉग होता है और डिफेंस के पर्पस पे डॉग को कुछ स्किल्स सिखाई जाते हैं, एंड डॉग उन स्किल्स को भरपूर इस्तेमाल कर पाता है. लेकिन फिर भी हम किसी भी एनिमल में ऑल बिहेवियर्स डेवलप नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग एंड चैंपियन कैन नॉट बिकम द डॉक्टर एंड इंजीनियर. टू बिकम द डॉक्टर एंड इंजीनियर या कारपेंट्री का काम या मेटलर्जी का काम, सिविल इंजीनियरिंग का काम, वो स्किल्स या ड्राइविंग का काम, ये स्किल्स हम ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं कर सकते. सो हियर दैट स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज वेरी मच लिमिटेड एंड कन्फाइंड. सेम इज द केस विद द ह्यूमन्स. ह्यूमन बींग्स में भी हर कोई बिहेवियर हम डेवलप नहीं कर सकते हैं. वाई वी कैन नॉट डेवलप विद द हेल्प ऑफ कंडीशनिंग
all behaviors in the human beings. क्योंकि as we know that human nature is itself different. One individual is different from the another individual in terms of capacities and capabilities, in terms of wills and wishes, in terms of tastes, in terms of temperaments. In every respect we are different. अगर हम mentally retarded children की बात करेंगे या स्लो लर्नर्स की बात करेंगे, वो सिर्फ बेसिक स्किल्स सीख सकते हैं with the help of conditioning. The person who is having the mental deficits, I mean to say you mentally retarded children, particularly जब एक severe mental retardation होगी, तो severely mentally retarded child cannot drive the car. वो कार नहीं चलाना सीख सकता है, वो टेलरिंग का काम नहीं कर सकता है. टू बिकम द डॉक्टर इंजीनियर, ये तो उसके बस की बात ही नहीं है. जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं, दे हैव कॉग्निटिव डेफिसिट्स, दे कैन नॉट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क्स. वो सिंपल टास्क्स परफॉर्म कर पाते हैं. दैट इज वाई with the help of training, by providing the training to the human beings, every behavior cannot be developed. वैसे तो जे.बी. वाटसन ने खुद अपनी डेफिनेशन का क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि जब उसने व्यू पॉइंट दिया है, गिव मी 1 dozen of healthy children, I will make them whatever you want. Child becomes doctor, child becomes engineer, child becomes thief. उसने खुद अपनी डेफिनेशन का क्रिटिसाइज किया है. एक साइड वो कहता है कि इट इज द इन्वायरमेंट विच मॉडिफाइज एंड शेप्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दूसरी तरफ वो कंडीशन रखता है, गिव मी ए हेल्थी चिल्ड्रन. इट मीन्स दैट बायोलॉजिकल फैक्टर मैटर्स, इंटरनल फैक्टर मैटर्स. एज environmental factor is important, biological factor is also important. It is equally important as environmentalistic approaches. Number 5, neglects individual difference. Dear students, keeping in view operant conditioning theory, जैसे कि हमने already discuss किया है, operant conditioning theory is purely based on environmentalistic approach, because it is the environment which help us to shape the behavior of an organism. किस तरीके से हम environment के जरिए एक organism का behavior shape कर सकते हैं. It means that the type of environment will decide the perfection in an organism. जब तक कि हम एक environment provide नहीं करेंगे एक organism को, तब तक behavioral modification नहीं आ सकती है, तब तक कि हम एक ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले सकते हैं. बट द थ्योरी हैज बीन हाईली चैलेंज्ड एंड रिजेक्टेड. इट ओनली lays emphasis on one side, that is focus on or over emphasis on environment. It has neglected by and large role of heredity and biological factor. इसने इंटरनल फैक्टर को नेग्लेक्ट किया है. Because as we know that individual differences are existing, there is one of the psychology or branches of the psychology that is known as differential psychology. Differential psychology believes on individual differences. Dear students, there are 5 fingers in the hand and all are not equal. Every individual is unique in terms of capacities and capabilities, in terms of attitudes and aptitudes, in terms of wills and wishes, in terms of sentiments and temperaments, in terms of desires. In all respects, individuals are different. Operant conditioning theory neglected completely internal aspect of an individual. इसने इंडिविजुअल की फीलिंग्स को, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को, टेम्परामेंट्स और सेंटिमेंट्स को, डिजायर्स और विशेस को नेग्लेक्ट किया है. मैन इज नॉट ऑलवेज लाइक ए मशीन. जहां से हम चाहेंगे
उस साइड हम ले सकते हैं उसे। जिस दिशा में उसे ले जाएंगे उस दिशा में हम एक मैन को ले सकते हैं। मैन हियर आई मीन टू से यू इंडिविजुअल। नो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एज पर द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न, एज पर द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न। इसने सिर्फ फोकस बिहेवियरल अप्रोच पे किया, आई मीन टू से यू इन्वायरमेंटलिस्टिक एस्पेक्ट पे किया, बट बाय एंड लार्ज neglects the true nature of an individual. Without understanding the nature of the individual, there is no guarantee for the success. There is no guarantee for the effective learning. Keeping in view the operant conditioning theory, it believes training के जरिए हर कोई स्किल हम एक लर्नर में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है because there is matter of intrinsic motivation. ऑलरेडी नंबर ऑफ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, वी कैन ड्रैग द हॉर्स ऑन टू द शोर बट कैन नॉट मोटिवेट टू ड्रिंक। एक घोड़े को हम नदी पे ले सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं। पानी पीने के लिए हॉर्स के पास एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए। हॉर्स इंक्लूसिवली हियर रिप्रेजेंट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेम इज द केस विद द लर्नर। लर्नर जो है वो ट्रेनिंग के जरिए उसे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन नहीं आ सकती है, क्योंकि देयर इज मैटर ऑफ कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, देयर इज मैटर ऑफ टेस्ट्स, विल्स एंड विशेस। कोई लर्नर जिसे इंजीनियरिंग में टेस्ट नहीं है तो हम उसे ज़बरदस्ती ट्रेनिंग के जरिए इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। कोई पर्सन मेडिसिन में शौक नहीं रख सकता है, इंटरेस्ट नहीं रख सकता है, तो ट्रेनिंग के जरिए हम डॉक्टर नहीं उसे बना सकते हैं। इट हैज़ रिसर्चिकली प्रूव्ड दैट कि जब भी हमने फोर्सफुली किसी इंडिविजुअल को कोई भी फील्ड उसके लिए सिलेक्ट किया तो उसने कभी भी उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ओनली दोज पर्सन्स कैन डू द जस्टिस विद द कंसर्नड फील्ड हु इज हैविंग द कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज एंड अपार्ट फ्रॉम इट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फील्ड में मैटर करती है। एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हाईली रिजेक्ट्स द इंटरनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनिज्म। इट हैज आल्सो रिसर्चिकली प्रूव्ड, जिन्हें जबरदस्ती यानी कि बाई चांस हम फील्ड में डालते हैं वो फील्ड कभी भी ग्रो नहीं हो पाता है। अगर भले ही एक पर्सन के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है लेकिन उसमें मोटिवेशन नहीं है उस फील्ड के रिलेटेड, तो वहां पर ना वो इंडिविजुअलिटी ग्रो होती है ना फील्ड ग्रो हो पाता है। दैट इज वाई कीपिंग इन व्यू द साइकोलॉजी वी हैव टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू वेरियस टेस्ट्स लाइक इंटरेस्ट टेस्ट्स, एटीट्यूड टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट्स, मोटिवेशन टेस्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट्स should be given due importance before selecting the field for the person or individual. So far as operant conditioning theory is concerned, it by and large neglects the individual differences. It only focuses on providing of environment. ये सिर्फ फोकस करती है environment provide करना, and on the other hand completely neglects the individual's true nature. Number 6, developed on animals. Dear students, theory has been also highly rejected and condemned because the operant conditioning theory has been developed by conducting the several experiments on animals, especially experiment on rats and pigeons. जो भी behavioral theory है उन्हें डेवलप किया गया by conducting various experiments on various animals, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो एवन पेवलोव ने प्रपोंड की है, उसने थ्योरी प्रपोंड की है by conducting experiments on dogs. इसी तरीके से फेमस एक्सपेरिमेंट जो थॉर्नडाइक ने किया, दैट्स नोन एज पजल बॉक्स experiment of Thorndike.
and Thorndike has conducted the experiment on cat, or he has given the concept of primary laws and secondary laws. The primary laws and secondary laws of learning are the famous laws which were propounded by E.L. Thorndike. Same is the case with the operant conditioning theory. Operant conditioning theory has been propounded on pigeons and rats. When the B.F. Skinner conducted the experiments on pigeons and rats, finally he propounded the theory which is known as operant conditioning theory. Keeping in view the various experiments which were conducted on animals, the theory has been neglected and rejected. क्योंकि हम इस थ्योरी को ह्यूमन नेचर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड एनिमल नेचर. एनिमल नेचर और ह्यूमन नेचर में आसमान और जमीन का फर्क है. इसके लॉज जो है वो एनिमल्स पे डेवलप किए गए हैं. जब एक्सपेरिमेंटर ने एक्सपेरिमेंट पिजन और रैट्स पे किया, ऑन द बेस ऑफ दैट वेरियस लॉज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड. लेकिन उन लॉज को अब हम ह्यूमन नेचर पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड एनिमल नेचर. व्हेन वी विल मेक द comparative analysis between the human psyche and animal psyche, जैसे कि हम सब जानते हैं एनिमल नेचर जो है पर्टिकुलरली थिंकिंग ऑफ एनिमल्स इज लिमिटेड, या ओवरऑल थॉट प्रोसेस जो एनिमल्स की है वो लिमिटेड है. एज कंपेयर टू द ह्यूमन्स आर बीइंग कॉल्ड द क्राउन ऑफ द क्रिएशन. इट इज राइटली कोटेड बाय समवन, मैन इज बीइंग कॉल्ड क्राउन ऑफ द क्रिएशन. इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं. वाई मैन इज बीइंग कॉल्ड क्राउन ऑफ द क्रिएशन? क्योंकि मैन का जो ब्रेन है ये हाईली डेवलप्ड है. द कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन्स आर हाईली डेवलप्ड एज कंपेयर टू द एनिमल्स. तो कोई भी कंपेयर ह्यूमन नेचर और एनिमल नेचर में नहीं है. और जब ये थ्योरी propound की है एनिमल्स पे, तो हम इसे जनरलाइज ह्यूमन बींग्स पे नहीं कर सकते हैं. वंस अगेन द थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स, क्योंकि ऑल बिहेवियरल थ्योरीज जो है ये डिफरेंट एनिमल्स पे propound की गई है, तो हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे. These were various limitations or drawbacks of operant conditioning theory. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.